Hello, guys, and welcome back to this channel. I hope you guys are doing absolutely fine. My name is Tanmay Patil, and I welcome you to this amazing and most interesting video of the Basics of Technical Analysis playlist. Okay, now in this video, we're going to talk about a very interesting pattern, and without wasting any time, get your notebooks and pen and paper. And definitely, let's move on with this video as I can't wait to tell you what is in this video as well. So let's move on with this video. Now, I know you guys must have heard so many people outside saying the analyst or other YouTubers, other mentors saying that double bottom, double top. लेकिन ये pattern है क्या? Why is it called the double bottom? Why is it called the double top? Double bottom pattern is being used on daily basis as well in 5-minute candlesticks, in 15 minutes and 30 minutes on Bank Nifty and other various stocks as well. Now, why is this pattern given so much of importance? Okay, why? Because first of all, you can get your target and measure your target. Second, the entry and the exit is very easy. थर्ड, आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो रहता है वो बहुत ही अच्छे से डिसाइड कर सकते हो लुकिंग एट दिस पैटर्न. ओके, सो I just want you guys to know that why is it called double bottom is because it forms two bottoms, also known as the W pattern. But I found the most common word known as double bottom. So double bottom, also known as the W pattern, because it forms two bottoms and gives an upside breakout toward greater sides. Okay, this is where many people say buy the dip, buy the dip. This is where the dip is being formed. It takes support and then instantaneously it goes up. Then we talk about double top. This is a bearish pattern. This is a bearish reversal pattern. It's what it's supposed to do is basically it's supposed to go to the higher levels, but without facing any resistance. It's supposed to break the higher level, take a support and go towards the higher highs and make higher lows. अगर simple language में समझाओ तो resistance face किया at the same level जो previous resistance था, that is why it formed a double top. Same resistance form किए and then it has fallen एंड एक रिवर्सल साइन मिल गया है जिधर आप ट्रेड भी ले सकते हो, एक स्विंग ट्रेड भी ले सकते हो, एक बहुत ही अच्छा ट्रेड भी ले सकते हो जिससे आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट भी मिल सकता है. उसकी वजह से यू कैन मेजर इट ऑल्सो कि कैसे आप प्रॉफिट ले सकते हो. सो आई जस्ट एक्सप्लेन इट यू इन दिस वीडियो एंड लेट्स मूव ऑन ओवर हियर ऑन द लैपटॉप एज आई एक्सप्लेन इट यू everything, the entry, SL, and how this pattern is formed. Okay guys, so सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं वो है डबल बॉटम के बारे में. ओके, नाउ एज द नेम सजेस्ट इटसेल्फ, इट इज अ वेरी इसेंशियल पैटर्न. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड कि डबल बॉटम का मीनिंग क्या रहता है. जब दो बॉटम्स बनाता है, ओके, लाइक इट फॉर्म्स लाइक अ डब्ल्यू. ओके, दैट्स व्हाई it is known as a double bottom, because it forms two bottoms over here, which is the support and gives a very essential breakout. Okay, now ignore the fact कि ये forex का chart है. Okay, let's just ignore the fact, but let's just look at how this works, right? कि आपका stop loss किधर रह सकता है, आप entry कैसे कर सकते हो, and आपके targets कैसे कैसे achieve हो सकते हैं. Okay, now this pattern is so good with Bank Nifty, daily chart. You can use it with the 30-minute charts as well for intraday basis. Okay, and even on 5-minute charts. Now this pattern में हमें कैसे दिखता है? How do we understand? सबसे पहले हम जान हमें as we know that the trend always goes down like this. It never goes in a straight line. It always makes lower lows and lower highs. So exactly this जो ये जो trend line दिख रही है आपको, this trend line which breaks it, okay, takes a continuous support at these levels and gives a retest and then goes up. This is known as a double bottom pattern. Okay, now let me just first erase all of this so that you guys can get a very clear idea कि ये pattern जो है इतना important क्यों है. Okay, this pattern is very important for the sake to understand कि इसमें targets जो है आपको easily identify हो सकते हैं. Okay, now what will your target be? ये जो complete target दिख रहा है, ये bottom, ये जो support level जो है, this whole line, okay,
You draw the same, you measure the same line, and this will be your target. Okay, this will be your take profit. इधर TP डाल देता हूँ. और फिर आपका एंट्री कैसे रह सकता है अगर आप थोड़े एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, देन डेफिनेटली दिस ट्रेंड लाइन जो ब्रेकआउट होता है फिर रीटेस्ट आता है, फिर इस लेवल पे एंटर कर सकते हो. ओके, ई इज नोन एज द एंट्री लेवल. और आपका स्टॉप लॉस कैसे रहेगा, दिस होल सपोर्ट जो रहता है इसके अराउंड यू कैन कीप योर एस एल एंड गो फॉर वेरी वेरी गुड स्विंग, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छा रेशियो मिलता है of 2:1. Okay, 1:1.5 as well you can get, or 3:1. क्योंकि अगर जैसे आप देख रहे हो कि मार्केट कंप्लीट बुल मार्केट में, करेक्ट, इस जैसे हिकअप्स जो मिलते हैं, लाइक दीज काइंड ऑफ डाउनफॉल्स वे वी गेट एंड दीज पैटर्न्स वे वी ऑब्जर्व, we get a very higher target to achieve. Okay, but being on the safe side, we can book 50% of our profit at these levels, and the other 50% अगर थोड़ा सा फॉल आता है तो इधर भी बुक कर सकते हो, या फिर हायर लेवल पे जाता है यू गेट ग्रेटर पॉइंट्स. ओके, यू गेट ग्रेटर रिवॉर्ड्स एज वेल, ये भी टारगेट बुक कर सकते हो. ओके, सो अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन देन यू कैन बुक दैट टारगेट एज वेल. लेकिन जो प्राइस एक्शन अभी बता रहा हूँ जो कि डबल बॉटम पैटर्न है, डबल बॉटम, व्हाई इज इट कॉल्ड, because it makes two bottoms over here, makes a W. It is also known as a W pattern. बहुत अलग अलग नाम है, but a very common name is known as double bottom pattern. Okay, so this is about the double bottom pattern. Okay, very essential. I hope you guys note it down as well. Okay, you make this pattern on your notebook. वैसे ही करता था when I was learning about the stock market. I used to note down कि कैसे ये breakout होता था, किधर एंट्री हो सकती है, किधर किधर स्टॉप लॉस हो सकता है, एंड एवरीथिंग. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू डबल टॉप पैटर्न. ओके गाइस, सो डबल टॉप पैटर्न में क्या होता है, एग्जैक्टली द ऑपोजिट. ओके, इट फॉर्म्स टू टॉप्स. ओके, इट फॉर्म्स अ एम पैटर्न. इसको एम पैटर्न भी बोल सकते हो या फिर डबल टॉप भी बोल सकते हो, एनीथिंग व्हिच यू वांट. लेकिन द होल पॉइंट इज कि ये वर्क कैसे करता है. करेक्ट. नाउ लेट्स रिमूव दिस होल लाइन. चलिए रिमूव कर देते हैं, फिर अच्छे से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाऊंगा, क्योंकि दो दो लाइन फिर ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा. ओके, नाउ लेट्स टेक इट इन अ शॉर्ट टर्म पीरियड कि ये जो ट्रेंड लाइन दिख रही है आपको, दिस होल ट्रेंड लाइन ओवर हियर, दिस लेवल एंड दिस लेवल. ओके, दिस लेवल बिकम्स वेरी एसेंशियल क्योंकि ये प्रीवियस रेजिस्टेंस था, अब ये समवॉट ऑफ अ सपोर्ट बन गया. लेकिन आफ्टर दिस प्लेस वी वर सपोज्ड टू मेक अ न्यू हाई, लेकिन ये बना नहीं पाया, and due to this we face some resistance and we fall all the way down. Now where do we identify to get an early entry? Okay, and I'll tell you the safe entry as well. लेकिन early entry कैसे मिल सकती है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है, एक रीटेस्ट आता है, तब ये नीचे जाता है. ओके, दिस रीटेस्ट पार्ट जो रहता है ना, ये एंट्री होती है. दिस इज व्हाट मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स डू, दे ट्राई टू गेट एन अर्ली सिग्नल टू एंटर. ओके, but they, some traders also who are smart enough, they wait for the whole price action to be formed, क्योंकि इधर से sideways भी जा सकता है. Okay, so this is one of the important factors that you need to see with other indicators. जो कुछ भी आप यूज कर रहे हो, अगर pivots यूज कर रहे हो pivots यूज करो, फिर RSI यूज कर रहे हो तो RSI यूज करो. अगर आप 20 EMA, 200 EMA, 50 EMA वो भी यूज कर रहे हो तो वो भी यूज करके फिर ये कंबाइन करके आपको एक अच्छी एंट्री मिल सकती है. And that's how professional traders do it. Take an entry at these levels. Okay, now where will your stop loss be? Over here. लेकिन टारगेट कैसे रहेगा, exactly the same way. ये जो पूरा लेंथ जो रहता है, that will from this support all the way down, जितना भी लेंथ रहेगा उतना आपका टारगेट रह सकता है. Okay, so this is how you identify a bullish signal and a bearish signal in both of these patterns. Okay, now let's move on to the charts और दिखाता हूँ कि कैसे ये परफॉर्म करता है स्टॉक्स में भी. Okay, या सो पहले आ जाते हैं रिलायंस में. ओके, रिलायंस में ओके, दिस दिस इज समवॉट, या दिस इज परफेक्ट. ओके, अब आप देख सकते हो इधर एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, ये जो प्रीवियस प्रीवियस रेजिस्टेंस भी था इधर. ओके, देन अगेन वी हैव अनदर सपोर्ट ओवर हियर. ठीक है, सपोर्ट मिल गए हमें, सपोर्ट सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लिया हमने कि सपोर्ट किधर है,
रेजिस्टेंस किधर है, एंड वेयर ऑल आर द लेवल्स। ये देखो, ये सपोर्ट और ये सपोर्ट। नाउ लेट्स ड्रॉ द ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन कैसी दिख रही है हमें? ओके, ट्रेंड लाइन जो है समवॉट एट दीज लेवल्स दिख रही है, करेक्ट। नाउ व्हाट व्हाट डू वी यूजुअली ऑब्जर्व कि जब भी एक बुलिश ट्रेंड दिखता है हमें, ओके, लेट्स लुक एट द प्रीवियस हिस्टोरिकल डेटा एज वेल, राइट। अगर देखना है, ट्रेंड तो काफी अच्छा था, काफी मोमेंटम में था ये स्टॉक। 30 मिनट्स में देख रहा हूँ, काफी अच्छा था, मोमेंटम में था। सो व्हाट इट शुड बी डूइंग इज, जो प्रीवियस हाई था वो ब्रेक करना चाहिए, लेकिन इट्स फेसिंग अ रेजिस्टेंस एग्जैक्टली at these levels. Okay, now you need to be cautious and you need to start looking for a short position, or you need to start booking some minimum profit अगर आप swing trading कर रहे हो। Okay, later on what do we see कि ये जो complete trend line है वो भी break होती है। उसके साथ ब्रेक होने के बाद ये पूरा जो मेन सपोर्ट है आपका जो दिख रहा है, लेट्स जस्ट ये जो मेन सपोर्ट है वो भी ब्रेक हो गया। अब एंट्री कहां पर होगी? ओके, टू बी ए सेफ एंट्री, ये रीटेस्ट दिख रहा है, एंटर आप इधर करोगे। स्टॉप लॉस यू कैन कीप एट दीज लेवल्स, लेकिन हमें टारगेट देखना है। टारगेट कैसे आएगा? अब टारगेट जो है हमारा कंप्लीट ये लेवल रहेगा। ओके, नाउ let me just get it right. Okay, yeah, these levels, okay, these whole levels will be our target। रिस्क टू रिवॉर्ड कितना मिल रहा है, कितना परसेंटेज मिल रहा है? लेट्स सी, 3.2, ओके, 1.6, ओके, 1.6 का बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड मिल रहा है, लेकिन लुक एट द विक हाउ इट मेड, it has gone below, it has gone more than 4% down, guys। Okay, so this is one of the things that you need to see as well कि कैसे ये मूवमेंट हो रहा है। ओके, देन अदर थिंग्स आर, इसके इसके सेलर्स देखो कितने ज्यादा थे। दैट मीन्स सच अ ग्रेट कंफर्मेशन, सच एन अमेजिंग पैटर्न, प्लस रीटेस्ट भी मिला, एक परफेक्ट एंट्री भी मिली, स्टॉप लॉस भी बहुत नीचे बहुत ही कम रहेगा, और एक बहुत फ्रेश पोजीशन मिला आपको एक बहुत ही अच्छा टारगेट अचीव करने के लिए। ओके, सो दिस वाज डबल टॉप पैटर्न। ओके गाइस, रिमेंबर दैट दिस इज डबल टॉप पैटर्न। अब थोड़ा आइडेंटिफाई करते हैं कि डबल बॉटम कौन से स्टॉक्स में हो सकते हैं। गो विथ दिस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक इनफी में है क्या? ओके, नाउ you're at these levels, yes, perfect, perfect। this, look at this guys, look at this, just perfect, what a perfect pattern over here। ठीक है, थोड़ा सा डाउन ट्रेंड दिखाया है ओके, प्लस डाउन ट्रेंड के साथ अगर आप देख सकते हो, इधर रेजिस्टेंस फेस किया, इधर रेजिस्टेंस फेस किया, इधर रेजिस्टेंस फेस किया। ओके, नाउ यू नीड टू बी कॉशियस कि ये जो सपोर्ट लेवल था ये ब्रेक हो रहा है, या फिर एंट्री मिल रही है हमें, या फिर क्या हो रहा है। दिस होल सपोर्ट लेवल जो दिख रहा है आपको कैसे 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 बिहेव कर रहा है। देन देयर इज अनदर अनदर रेजिस्टेंस लेवल, दिस थोड़ा सा बड़ा हो गया, दिस इज अनदर रेजिस्टेंस लेवल ओके। so there also we need to see, now this is not exactly a perfect मतलब नहीं क्या जैसे बुक्स में दिखाते हैं वो ऐसे एग्जैक्ट वाला तो नहीं है, ठीक है, but somewhat if you guys can relate to it then definitely you guys can understand कि मार्केट ऐसे ही चलता है। okay, so first support we see, then again we face a resistance at the same level over here। okay, again we face resistance, ये हटा देते हैं, okay, ये हटा देते हैं, फिर again it comes down and we see that this whole downtrend is being formed। लेकिन again with that being said, again it's facing some support at these levels itself, correct। ये लेवल पे वापस सपोर्ट फेस कर रहा है और इस पे इमीडिएट बाइंग हुई है, and then you draw a trend line। okay, you understand कि okay fine, now it's in a short term downtrend, और आपको अंडरस्टैंड हो जाता है क्योंकि दिस ट्रेंड लाइन इज गोइंग टू बी अ बिट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इधर से एक बहुत ही हैवी फॉल आ रहे हैं, ठीक है। एंड एज सून एज यू सी एन आउटबर्स्ट ओवर हियर, ओके, आउटबर्स्ट ओवर हियर, देयर इज अ ग्रेट रीटेस्ट ऑन द नेक्स्ट डे इटसेल्फ, ओके, on the next day itself। now what can you go,
this is your whole, okay, थोड़ा सा छोटा रख सकते हैं, and this your आपका जो target रहेगा, which will be around at these levels, correct? So just take this one, okay, this will be your target, this will be your target. कितना मिल रहा है? 5%, 5%, और आपके एसएल के नियर भी नहीं है क्योंकि आपने बहुत ही परफेक्ट एंट्री ली है, ओके. सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस पैटर्न, और ये डेली बेसिस पे भी यूज होते हैं बैंक निफ्टी ऑप्शंस एंड बहुत. एंड इफ यू गाइज वांट टू सी द मोर, ये देखो किधर किधर तक जाके पहुंचा है. दिस हैज लिटरली टच्ड 7%, एंड इफ यू वांट टू बी ऑन द सेफ साइड 6%. अब 1% थोड़ा सा और रुक जाते थे तो आपको वो भी मिल जाता था, ओके. So that's how important this whole pattern is, and I hope this has helped you to understand, and I hope you guys have jotted it down. कैसे मैंने थोड़ा सा analysis किया, okay, I did it in front of you guys itself. कैसे मैंने थोड़ा सा stock identify किया, कैसे downtrend था. Again, then I saw which support, which level, okay. ठीक है, the market is closed right now, that's why I can't show you live trading. लेकिन definitely I'll look into it कि अगर मैं live trading वापस डाल सकता हूँ, because sometimes it gets disturbing while doing some live trading, or I don't press the button and everything. That's why I had stopped that whole series. But let's see if I can bring some live trades itself instead of that whole series. Some live trades, and explain कि मेरा psychology कैसे रहता है, how is my mentality, do I keep my whole surrounding very silent, or do I listen to music, or how I'm trading, क्या strategies है, कैसे हैं, do I use indicators, what indicators I use, and everything, okay. So I hope you guys have liked this video. Till then, just subscribe to the channel if you guys are new to the channel, and definitely hit the like button and share it to more and more people, and just be profitable, and stay healthy. Until then, see you. Goodbye.